हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ है तो स्टिल यू हैव सम टाइम इन योर हैंड। अभी भी आपके हाथ में टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं और आप इंग्लिश में मतलब गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बट you have to follow some tips, you have to do something, you have to practice a little, right? So आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चंडीगढ़ रीजन के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिटिकल पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने लेटर राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एंड इतना इजी क्वेश्चन था, इतने इजी क्वेश्चन थे लेटर राइटिंग के कि आप मतलब अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपके लिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। आई होप आपने 5 आउट ऑफ 5 गेन किए होंगे, अदरवाइज आपने 4.5 4 भी अगर आपको मिले हैं दैट इज वेल एंड गुड। बट if you have scored 3 or less than 3 then you need more practice, right? मेरी क्लास में जो बच्चों के एग्जाम्स मैंने अभी चेक किए हैं तो मतलब मेरे पास 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा है लेटर राइटिंग का, क्योंकि उसमें शुरू से मैं पढ़ा रही हूँ, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली टेस्ट नहीं करवा पाई थी, क्लास टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा पाई थी, दैट्स व्हाई। बट आई एम श्योर कि आने वाले 10 to 15 डेज में आफ्टर प्री बोर्ड एग्जाम मैं दोनों सेक्शंस को 5 आउट ऑफ 5 की कैटेगरी में ले आऊंगी। लेकिन उसके लिए मेन जो है वो क्या है कि आप लोगों की जो है प्रैक्टिस होनी जरूरी है, और जब तक आप खुद से नहीं सीखने की कोशिश करोगे तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो आप मेरी लेटर राइटिंग की वीडियोस देख के दोबारा से लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने पहला रिजल्ट चेक कीजिए, अगर आपके मार्क्स 3 या 3 से कम हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कीजिए और जनरल लाइंस को लर्न करके फुल मार्क्स जो है एंश्योर कीजिए लेटर राइटिंग में। आज हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 5 में से मतलब 4, 4.5, 5, 3 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं, और ये आपको पास करने के लिए मतलब एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So here is the question, that is question number 5A. The bar graph given below contains data related to the people's opinion about their consideration for the most important factor for success. So this is the introductory line as well. First of all, you need to keep in mind the format, because the bifurcation of marks are, that is 1.5 marks for format. That means the examiner is to ensure whether you have mentioned the intro part and then body of the paragraph and last conclusion, right? So you need to mention 1 or 2 lines in introduction and 1 or 2 lines in conclusion. So 1.5 mark for format, 1.5 for content, and the rest 2 are for accuracy and vocab that you have used, right? So first this line is, this sentence is the introductory sentence. Here it is multiple bar graph. You can see the 2 bars, right, showing different data. Then what it is showing people's opinion about their consideration for the most important factors for success. If you can just find out or locate these points, right, which I have mentioned, these bullet points, then you can easily convert these bullet points into the paragraph, right? So this is only for practice, but in your exams you are to write directly the paragraph. So here you are to write down an analytical paragraph, that is from the word limit is 100 to 120, and carefully and analyzing the data, right? You are requested to make suitable comparisons also. So the most important factor for success, and older and younger. So you can see the percentage, and apart from that here are the 6 factors, right? So this is the x-axis and this is the y-axis. So you can even mention this in the introductory part, that x-axis is showing the different factors and y-axis is showing the percentage of number or the percentage of people, right? So the next one is representing, what it is representing opinion of older and younger people, that is shown in the different types of bars, right? The lighter one is older and the darker one is younger.
Now you can see maximum people, both elder and means both older and younger, they have favored or they have opted hard work, right? Maximum people vote for hard work and minimum are saying about money. Minimum people choose money. Then you can see, if we talk about the difference, here is a little difference, here is also a little one, here is also a little, and here is also the same is here. But in this part, right, if we talk about the talent, then there is a significant difference. So significant difference in opinion of younger and older people in reference to talent. Then a little difference regarding intelligence and luck. So you can see in intelligence and luck there is a little difference. Apart from that, similar preference for talent and intelligence by older. You can see these bars, right? Let me select eraser first so that I can show you it clearly, right? 1 minute please. Now you can clearly see what is it. You can see this bar and like this bar, right? They are equal. Apart from that, this one and this one equal. So here I have, means you have to watch carefully, right? You have to observe the graph carefully. Then you can see similar preference for talent and intelligence by older people and similar preference for luck and honesty by younger people. This is the conclusion. Overall, most of the people consider hard work as the most important factor for success. So if you are done with this bullet points, this is for just practice, then you can easily convert them into the form of a paragraph, right? So let's start writing the paragraph. So you can see the multiple bar graph given here is showing people's opinion about their consideration for the most important factor for success, and it represents the opinion of older and younger people. So this is the introduction part and these 3 bullet points have been covered here. Then you can see maximum number of people, both younger and older, they vote for hard work as the most important factor for success, whereas minimum number of people, both younger and older, choose money. So next 2 points have been covered. There is a significant difference between the opinion of younger and older people in reference to talent as the factor for success. So this point is also clarified. Then on the other hand, there is little difference in their opinion regarding intelligence and luck. So next point, then there is a similarity in preference for talent and intelligence by older people and for luck and honesty by younger people. These 2 points have been elaborated now. And at the end, what we are to conclude? Overall, we can conclude that the most of the people consider hard work as the most important factor for success, and according to them, money matters a little for being successful. So this is the conclusion part, right? So first of all, the examiner would check if you have mentioned the introduction and the conclusion and the rest is body. So he or she would give you 1.5 marks for the format. Then next one means your content, right? How means impressive is your content, then you would get 1.5 marks for the content. Apart from that, if you have not committed any error, then you would get full 2 marks for the accuracy. If you have committed 1 or 2 errors, then it may be 1.5. So that means you may ensure 4.5 or 5 marks in your analytical paragraph. So this is how you have to practice, right? See the another question, that is of pie chart. First of all, it will be very easy for you to means answer this paragraph right now. After watching this video, you can be more confident, right? So here is the pie chart. What is it is showing the percentage of students taking admission in different faculties of XYZ university in year 2015 and 2019. So it is a pie chart showing the percentage of students taking admission in different faculties year 2015 and 2019. Then in 2015 you can see the first of all maximum, right? Maximum students choose science and medicine, that is 32%, and in 2019 they choose business studies. Then the maximum number of students choose business studies. Law is the least selected stream in both year, right? Here it is 18%, here it is 17%. In both of the year, law is the least selected.
In 2015, 32% opted for science and medicine, and the percentage decreased in 2019 in 21%. You can compare stream wise also, right? Science and medicine, that was 32% in 2015 and it decreased to 21% in 19. Then in 2015, 21% opted for arts and it increased significantly to 27% in 2019. The same thing is with business study. It has also increased from 29 to 35%. Then in 2015, law was chosen by 18% and the number further decreased by 1%. That is, it becomes 17%. So overall, what we can see, law is the least popular stream and maximum students choose either science or medicine or business studies, right? So these two are the most popular among the students. All right. So now it is time to write down the paragraph. So let's start writing the paragraph on the basis of these bullet points. So the pie chart given here presents the what it is presenting, right? So you can see the pie charts, actually it is two now. So we have to mention the pie charts given here present the percentage of students taking admission in different faculties such as arts, science and medicine, law and business studies of XYZ University in the year 2015 and 2019. So this is the introduction line and we have covered all the factors mentioned in the question, right? What it is, the 2 years 15 and 19, and then different streams, 4 streams are there. Apart from that, the question means the sentence given in the question. Next, now we are to just elaborate these points. In 2015, maximum number of students choose science and medicine, whereas in 2019, business study became the most popular stream. Law is the least selected stream in both years, 2015 and 19. In 2015, 32% opted for science and medicine and the percentage decreased in 2019 to 21%. Means the sentences will remain almost the same. The structure will remain almost similar, right? But only you have to change the data apart from that, the figures. In 2015, 21% opted for arts and the percentage increased significantly to 27% in 2019. The same is with business studies. In 2015, 29% selected business studies and the percentage increased to 35% in 2019. Then mentioning about law, in 2015, law was chosen by 18% and the number further decreased by 1% in 2019. This one is the conclusion. Overall, it can be concluded that law is the least popular stream and maximum students choose either science and medicine or business studies, right? So here we are done with the second analytical paragraph. So I think this is the easiest question, right? And the most scoring question also. And it just need a little practice. देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना एनालिटिकल पैराग्राफ मुश्किल लगता है. वो कहते हैं कि नो मैम ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब कैलकुलेशन करो या स्टडी करो चार्ट्स को, और मतलब उनको ये लगता है कि मैथ्स बीच में आ गया तो थोड़ा मुश्किल हो गया. लेकिन आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, ये सबसे ज़्यादा ईजी भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्कोरिंग भी है. और इसकी एक ये ट्रिक रहती है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं तो ये आपको पास होने में भी हेल्प करेगा या आपकी ग्रेड चेंज करने में हेल्प करेगा. देखिए सपोज आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा, आपको उसमें टीचर ने 3 मार्क्स दिए. अब जब आपका पूरा पेपर चेक हो गया और लास्ट में पता चला कि आप 59 पे आ रहे हैं, राइट? नाउ यू नीड ओनली हाफ मार्क, राइट? ओनली हाफ मार्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज योर ग्रेड. सो टीचर के पास ऑप्शन रहता है कि वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ या आपके जो लास्ट वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें आपको हाफ मार्क कहीं पे एडजस्ट करके वो आपको 59 से 60 पे ले आएगा. ठीक है, तो आप
इसीलिए एनालिटिकल पैराग्राफ आपको मान लो यहाँ 3 मिले हैं और आपका टोटल 59 बन रहा है, तो आपको यहीं पे हाफ मार्क एडजस्ट करके 59.5 हो जाएगा, जो कि राउंड होके आपका 60 हो जाएगा। और 60 की वजह से आपकी ग्रेड चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे सॉरी आई एम नॉट गेटिंग इट एक्चुअली, 60 टू 69, यस 60 टू 69 एक ग्रेड रहती है, ऐसे 50 टू 59 एक अलग ग्रेड रहती है। तो अगर आपके 59 आ रहे हैं तो एग्जामिनर ट्राई करेगा कि वो आपको 60 पे ले आए, लेकिन उसके लिए उसके पास मार्जिन होना चाहिए। और ये मार्जिन कहाँ पे मिलता है? एनालिटिकल पैराग्राफ में, या आपके जो लास्ट वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर सपोज करो आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा ही नहीं है, तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे? तब तो आपके 0 ही हो गए ना। अब अगर सपोज करो आपको 27 मार्क्स चाहिए और आपके 20 मतलब 5.5 कहीं आ रहे हैं, या आप 25 आ रहे हैं, और आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन और एनालिटिकल पैराग्राफ को जस्ट अटेम्प्ट भी किया है, कुछ कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत क्लास में सीखा है, तो आपको वो हाफ हाफ मार्क दे के भी आप 27 पे आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बिल्कुल भी नहीं। एनालिटिकल पैराग्राफ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और इसका एक बेनिफिट और है कि ये आपको अनसीन आएगा। अनसीन मतलब ये तो है नहीं कि आपको कोई 10 पैराग्राफ दे रखे हैं, आपको उन्हीं को लर्न करना है, उन्हीं को आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। आपको क्या करना है? जस्ट प्रैक्टिस करनी है। बस आपको जो है, जो भी आपका पाई चार्ट है वो आपको स्टडी करना अगर आ जाता है, और आप जस्ट नॉर्मल से सेंटेंसेस बना के भी उसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसे पहले बुलेट्स में इसको अरेंज कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद उन पॉइंट्स को जस्ट आप पैराग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और आप पेपर में ऐसे मत लिख के आना बुलेट्स बना के। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुलेट्स बनाकर लिखाते हैं, पॉइंट्स बनाकर। आपको पैराग्राफ लिखना है, ना कि पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है? तो आप पॉइंट्स में अरेंज कीजिए, उसके बाद उसको पैराग्राफ में जरूर कन्वर्ट कीजिए। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से दोबारा देख सकते हो, आप खुद से कोई और आपका साथ में क्वेश्चन पेपर लेके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं भी आने वाले दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले पूरी कोशिश करूंगी कि काफी हद तक जो सैंपल पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं क्लास में भी इतना नहीं करवा पाती हूँ, बट क्लास में रिवीजन कराऊंगी और सैंपल पेपर्स जो है वो वीडियो के थ्रू सॉल्व करवाऊंगी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये सेशन। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको सीखने को मिले कुछ नया। ओके, और आपके बोर्ड में एग्जाम्स अच्छे आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।